Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. In today's video, I'll try to explain what is theater of the absurd, how this word was coined, what is the history, and how it is relevant in your English literature syllabus, right? So the first is theater of the absurd. This is like this. You have already studying Waiting for Godot. That is also from the Absurdist theater. So in the picture, this character is Lucky. So this is human condition. Then comes let me go back. Here is before theater of the absurd. In World War I and World War II times, every day life could be described as absurd. ठीक है, World War I and II, as all of you know, it brought a lot of destruction. बहुत तबाही हुई थी, इंसानी ज़िंदगियों का नुकसान हुआ था. That's why especially after World War I and II, everybody was considered and their life was described as an absurd. So the second point is, to meet folk of Europe and Russia, life had become a senseless waste. ठीक है, वहाँ के लोगों के लिए जो life थी, that had become एक complete waste. They did not believe in hope or optimism. सब खत्म हो चुका था. They needed to do some way to redirect a frustrated that captured the world. Before of the senselessness of World War II, a catalyst had to be created to capture the pure absurdness of the world. So this was in fact the meaning and purpose of this thing. Then how this term was originated. Origin of absurdism कहाँ से शुरू हुआ? The formation of the absurd theater of the absurd was not a unified movement. ये कोई एक बहुत कोई unified movement नहीं थी. ठीक है, ये कैसी थी? It was formed in stages. Stage wise जो है ये form हुई by separate people in a separate places and time. एकदम से नहीं ये आ गया कि theater of absurd start हो गया. It started back और बहुत जो है step by step it developed. Albert Camus, a French philosopher, first presented the idea of absurdism. सबसे पहले जो है एल्बर्ट कैमस ने जो है इसको, जो फ्रेंच फिलोसोफर था, उसने ये आइडिया प्रेजेंट किया था. बट द टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड वाज क्रिएटेड बाय मार्टिन एस्लिन जो है, इसने इस टर्म को कॉइन किया. Albert Camus used the theater of the absurd as a device to bring attention to certain human traits. उसने ये डिवाइस यूज़ की थी, और वो क्यों यूज़ की थी कि वो प्रेजेंट करना चाहता था बिविल्डरमेंट, कि इंसान हैरान है. इसमें आप वेटिंग फॉर गॉडो में भी देखेंगे कैरेक्टर्स, वॉन्डर है, एंग्जाइटी है, फेस ऑफ एन अनएक्सप्लेनेबल यूनिवर्स दैट दे कैन नॉट एक्सप्लेन वेयर दे आर, व्हाट दिस यूनिवर्स इज अबाउट एंड व्हाट इज इट्स पर्पस एंड वर्थ. देन कम्स देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न एब्सर्डिज्म. ईस्टर्न जो है वो कैसा है? इट इज़ रिलेटिवली रिलैक्स्ड एंड लेस थॉट प्रोवोकिंग आफ्टर स्टेनलेस डेथ, इंस्पायर्ड बाय बेसिक वेस्टर्न थिएटर. जो ईस्टर्न है वो वेस्टर्न थिएटर से इंस्पायर्ड है. एंड वेस्टर्न जो है वो दैट वाज क्रिएटेड बाय मार्टिन नेस्लिन, एंड प्ले राइट्स ऑल शेयर द व्यूज दैट द मैन इज लिविंग इन अ यूनिवर्स इन विच ही इज़ आउट ऑफ ट्यून विद. ठीक है, उसका एक हारमनी नहीं है विद द यूनिवर्स. अ मैन हु इज़ लिविंग इन दिस वर्ल्ड इज़ नॉट इन हारमनी विद द यूनिवर्स. So it was rooted in the avant-garde experiments of the 20s and 30s. These were some experiment की base पे जो है ये start हुआ.
देन कम्स इसकी रेलिवेंस क्या है, हिस्टोरिकल रेलिवेंस क्या है. द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड developed in response of World War II. I talked in detail in the class that it has a relevance with the World War II especially. Absurdism is thought to be one of the most pessimist form of drama ever created. Pessimism बहुत ज़्यादा इसमें हमें नज़र आता है, लेकिन होप भी है, स्पेशली इसमें हम वेटिंग फॉर गॉडो में वेट है गॉडो का, दैट गॉडो कैन बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट टर्म्स. ठीक है, देयर कैन बी 26 इंटरप्रिटेशन ऑफ अ टेक्स्ट, सो वी कैन इंटरप्रेट इन as many ways as possible, but the thing is कि we have to prove it. No traditional rules of theatre applied to this new form of playwriting. जो unity of time, place, action, characters and whatnot, hamasha and poetic justice, things like that, dramatic rules, they don't apply here. ठीक है, this is a new form of playwriting. In the time this theater had surfaced, normal life was considered quite absurd. Normal life was absurd, so absurdism was quite normal. The theater of the absurd was a device to question essential traits in play. So, what was the essential traits? What were the need? सो एब्सर्ड रेलिवेंस, फिलोसॉफिकल रेलिवेंस क्या है, पहले हमने हिस्टोरिकल रेफरेंस किया और अब फिलोसॉफिकल रेलिवेंस है. कंटेंट इन absurd theater shaped consciousness as a reaction to the seemingly senseless waste of life the human race is. To the absurdist, then and now, life is ridiculous. And the absurd future cannot be predicted. आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. दिस इज रिडिकुलस. ठीक है. दिस अलाउड थिएटर्स एंड प्ले राइट्स टू लीव सम ब्लैंक्स इन द एंडिंग ऑफ अ प्ले. ब्लैंक्स, कुछ कुछ ब्लैंक्स जो हैं वो एंड पे रह जाते हैं. So, who are some important absurd playwriter of the past and today? The first one is Albert Camus. Here is a picture. A French philosopher discovered the method of absurdism in 1942. Next is Martin Esslin. He created the term theater of the absurd in 1962. Then is Samuel Beckett. Here's the picture of Samuel Beckett. Born on April 13, 1906. He is one of the most well-known absurdists of his work for his work of Waiting for Godot. He was born in Ireland on Friday the 13th and on Good Friday. The next is, here are some more writers. Eugene Unesco, born in Romania, he was fascinated with the failure to communicate in language. ठीक है ना, इसमें भी हम देखेंगे वेटिंग फॉर गॉडो में भी कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट तो वो कर ही नहीं ना पा रहे. साइलेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड पॉजेज, दे आर मोर इम्पॉर्टेंट. उनकी वैल्यू ज़्यादा है, उनकी इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है, और जो उनके वर्ड्स हैं दे आर मीनिंगलेस. वर्बल गेम्स हैं, their memory is defective and they are crippled, they are tramps, they don't have any identity, they don't have any past, they are not certain about their future. So there are lots of things. So this is what Eugene Unesco says, that communication जो है, failure to communicate in language. He often said he became a playwright completely by accident. हादसाती तौर पे वो कहता है कि मैं राइटर बन गया. आर्थर Abnow. Uh, he was born in 1908. He was one of the first experimenters of the theater of the absurd. Arthur was born in Russia but brought up speaking French. His most famous play was Parody, which is many scenes which are described as dreamlike quality है उसके scenes में. Jan Genet, a French born in 1910, he was a criminal dilettante. He moved to Germany as young adult, found he could only find joy of the chaos when surrounded by order.
Shortly after returning to France, he wrote The Balcony. What is absurd impacts? Absurdism in the art had a large impact on modern day plays and television. Modern days play और television पे इसका बहुत effect है. The theatre of the absurd was the first theatre to introduce philosophy in theatre in basic manner. Led the way in the scarce use of props or elaborate sets. For the first time, all the answers were not given in a play. Sometimes the characters would end up in the same circumstances as they were in the beginning. जैसे हम पढ़ रहे हैं वेटिंग फॉर गॉडो में, जैसे the beginning is same, it is in the circular movement. Same है, the ending nothing to be done, the ending would be nothing to be done. Their position will not change, their condition will not change, their state will not change, they will keep on waiting. A new meaning to dialogue and communication was created. This form took miscommunication to the next level. Miscommunication इसमें बहुत हम देखेंगे that comes to a next level. So here are some plays of absurdists. ठीक है, कौन कौन से हैं? वेटिंग फॉर गॉडो है, एलिस इन वंडरलैंड है, बैल्कनी है. यहाँ हम देखते हैं, ये थोड़ा सा जो है एक बताने की कोशिश की है. व्हाट इज़ थिएटर ऑफ एब्सर्ड? थिएटर ऑफ एब्सर्ड में कंसर्न क्या क्या है? लेट मी यूज दिस. इट कंसर्न्स विथ डेथ, लाइफ, आइसोलेशन, कम्युनिकेशन. ठीक है, एंड फंडामेंटल रियलिटीज़ ऑफ ह्यूमन कंडीशंस. ठीक है, और लाइफ में किस चीज़ का? मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ को हम देखते हैं इसमें. देन हम देखते हैं कि एब्सर्ड जो सॉरी इधर आते हैं. एब्सर्ड जो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड है, ये क्या करते हैं? इट शेयर्स विद अदर ड्रामेटिस्ट देयर विजन्स ऑफ मीनिंगलेसनेस ऑफ लाइफ. ठीक है, दिस इज़ व्हाट दे डू. एंड उसमें होता क्या है? इन द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड व्हाट आर द फीचर्स? इसके फीचर्स क्या हैं? थिएटर ऑफ द एब्सर्ड के फीचर्स क्या क्या हैं? इसमें क्या होता है? अबेंडनमेंट है. किस चीज़ की? अबेंडनमेंट ऑफ लॉजिकल कंस्ट्रक्शन. कोई हमें लॉजिकल कंस्ट्रक्शन नहीं मिलती, लॉजिकल कोई बात नहीं उसमें मिलती, रैशनल थिंकिंग ऑफ आइडियाज़ हमें उसमें नहीं मिलती है. ठीक है, ये सारा जो है अबेंडनमेंट है. फिर उसके बाद इसके फीचर्स क्या होते हैं? अ मैन इज़ वेरी लोनली एंड ही इज़ अनएबल टू कम्युनिकेट, बात नहीं कर सकता. ठीक है, एंड ही डज नॉट हैव हिज सोशल पोजीशन इज़ इररेलेवेंट इन थिएटर ऑफ द एब्सर्ड. क्या है हम जो पढ़ रहे हैं वेटिंग फॉर गॉडो, उसमें क्या है? दैट देयर सोशल पोजीशन इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट, दे आर ऑल ट्रैम्प्स. ठीक है, इसमें हम क्या हम देखते हैं और क्या चीज़ देखते हैं? इसमें हम देखते हैं इर्रेशनैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस. इर्रेशनल चीज़ें जो हैं वो इसमें बताई गई हैं. फिर और क्या चीज़ है इसमें? हम देखते हैं इसमें स्टेज इसका कैसा है? स्टेज बिल्कुल क्या है? स्टेज दैट इज़ अबेंडेंड. ठीक है, दैट इज़ देयर इज़ इर्रेशनैलिटी ऑफ एक्सपीरियंस. लोनली मैन है, सोशल पोजीशन इज़ इररेलेवेंट. ये तो सारा कुछ उसमें हम देखते हैं. ठीक है, फिर उसके बाद जो है जो है इसमें जो है आपने थोड़ा सा मेरिकल और मिस्ट्री प्लेस जो थे उसमें उसका फंक्शंस क्या था? टू मेक द पर्सन अवेयर ऑफ द पोजीशन. ये छोड़ देते हैं क्योंकि ये थोड़ा और हो जाएगा. इसमें हम और क्या बात करते हैं? इसमें जी मैन कॉन्फ्रंट्स विद, किसके साथ इसका कॉन्फ्रंटेशन दिखाया जाता है? बेसिक फैक्ट्स ऑफ एग्जिस्टेंस. ठीक है, इसमें जो है टाइम जो होता है, टाइम क्या किस चीज़ को इन्वॉल्व होता है? दैट इन्वॉल्व्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेटिंग, नॉट नोइंग वाई, क्यों वेट कर रहे हैं, और फिर दैट इज़ वेन. और टाइम कौन सा होता है? दैट इज़ बिटवीन लाइफ एंड डेथ, बिटवीन बर्थ एंड डेथ के दरमियान जो टाइम है उसको वो बताता है. ये लिंक जो है ना ऐसे बनेगा. टाइम जो है वो क्या है? सॉरी, टाइम है जी
time is this between birth and death, and time involves this waiting. Wait होगा, और wait क्या होगा? Not knowing, that is in vain. So these are some of the concepts that I have tried to explain. um, Thank you very much for watching. Have a good day. Allah Hafiz.